Hi everyone. In this one, we are going to solve the weekly code test 498. All right. So let me tell you something first. This video will not be same as our POTD's videos. हम उनमें बहुत डिटेल में जाते हैं डेप्थ में. ऑल राइट. यहाँ पे हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे एंड हम यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन भी डिस्कस नहीं करेंगे. We'll just go straight forward and we'll see what the solution is and how we can do this. That's it. That will be our motive, and we'll go every question one by one, and we'll start from the first question, then move to the next, and next. I'll try to explain each and every concept that has been used in the question, and if it is a very basic thing, then definitely I will not explain that. It will be just a waste of time. That's it. And I hope if you are here to watch this solution, so you must be knowing all the required prerequisites concept for any particular question. Okay, so let's start with the very first question, which is easy. So we have an array, okay, and we have a k value. Okay, what we need to return is instability score, और वो कैसे डिफाइंड है. ठीक है, आपको हर जीरो से स्टार्ट करना है टिल अ इंडेक्स. लेट्स से 0 to 0, 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3. ठीक है, टिल द लास्ट. You need to pick the maximum value in that space, in that area, from 0 to I, and again starting from I, not I plus 1, again starting from I till the end, you need to find the minimum value. Okay, then take the difference of that max and that min. If your difference is lesser or equals to k, then this I is your answer. Okay. If you didn't find any I, okay, then you have to return minus 1. Got it? And basically return the smallest stable index. So eventually, if you will iterate from the left to right, so you will definitely get the smallest index, right? Because you are checking from the left to right. So eventually, if you will get your answer, it will be definitely smallest. All right. And at the last, अगर हमें आंसर नहीं मिलता है, then we need to return minus 1. Because the constants are very small, it is 100, so we can just have n square or n cube, right? So we'll just very basic code here. All right, start from the have a global variable max, क्योंकि eventually हमें जो first loop है, it will help us to maintain the maximum value till this index I. All right, and for every index I, we'll check from that I till the end of array what is the minimum value from this I till the end of array. Okay, so we have this max, we'll keep updating max at every I. Okay, then we'll have a min, a variable from this index I till the end of array. Check what is the minimum value, and then just after this loop we have this maximum, which is maximum till this I. Okay, so take the difference of them. If the difference is lesser or equals to k, then just return this I. अगर ये पूरा का पूरा आउटर लूप चलने के बाद, मीन्स हर एक आई तक पहुंचाने के बाद हमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिलता है, देन वी एट लास्ट विल रिटर्न minus 1. Got it? Very simple. I think pretty straightforward. And because of constant, also like it's a n square, completely fine. Okay. Next one, we have the second part of the same question. Complete question is same, like whole description, everything is same. Just one difference, that is constants. In the first question, वहां पे 100 थे, यहाँ पे 10 की पावर 5 है. मीन्स एन स्क्वायर तो एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा, एन स्क्वायर तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा. व्हाट डज इट मीन हमें कहीं ना कहीं एट मैक्स एन लॉग एन तक करना पड़ेगा चीजें. गॉट इट? कैसे हम एन लॉग एन तक कर सकते हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा सोचने का ट्राई करें. सी व्हाट वी नीड at every index I, I need the, what I need is the maximum value from 0 to till that index, and minimum value from that index till the end. Okay, can I say this in a better format, that maximum value from starting to till that index, and minimum value from ending till that index? Isn't okay, right? So basically, when you think like this, okay, we need the max from start, we need min from end,
till this index I. Eventually आपको माइंड में वो चीज आएगी कि प्रीफिक्स सफिक्स. ओके, प्रीफिक्स विल tell us the maximum value till this index, and suffix will tell the minimum value till this index from the end. Prefix is from start, suffix is from end. Got it? So basically, okay, do we actually need the prefix? Eventually, we are iterating from the left to right. We can have that just a single variable. We'll just keep updating that variable and we'll use that. Okay, but suffix is something we need that. Okay, so we'll compute suffix earlier. Okay, we are starting with building a suffix array starting from the last, and last element will be same as nums, right? क्योंकि उसके आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वही हमारा मिनिमम होगा. Then we start from the second last till the zero. What we are doing is we are storing the at suffix of I, what minimum at that number at that index, and minimum till the index plus one. अगर मैं इंडेक्स नंबर से यहाँ पर हूँ 1 पर, तो यह उसके पहले तक यहां तक क्या मिनिमम था 1, और अभी मैं जिस इंडेक्स पे खड़ा हूं इन दोनों में जो भी मिनिमम है वो मेरा इस पॉइंट पे मिनिमम होगा. गॉट इट? अगर अभी तक जो मिनिमम वही मेरा अभी भी इस वाले नंबर से छोटा है, देन मेरा मिनिमम सेम रहेगा. अदरवाइज मेरा मिनिमम अपडेट हो जाएगा फॉर द फर्दर यूज एज वेल. ओके, वी आर जस्ट बिल्डिंग सफिक्स एरे, देन वी आर मेंटेनिंग जस्ट अ सिंगल वेरिएबल, नॉट द होल prefix array, क्योंकि उसके में एक्चुअली में नीड है नहीं. ओके, देन we'll just keep updating our max variable for every I, and then just will check the difference max and suffix of I. What suffix I is telling? It is telling the minimum value from this index till the end of array. In other language, minimum value from the end of array till this index. Got it? If it is lesser than or equals to k, then return this index again, because we are iterating from left to right. Got it? So we don't need to check that smallest index. Doesn't matter. And even, and why we are returning here? Because we need to get the smallest index. So wherever we'll get our first answer, we'll just return it, right? We'll be not checking anymore like in further indices. Got it? So that's what exactly we are doing here. एंड एट लास्ट अगर हमें कोई भी आंसर नहीं मिलता, तो ये सारे के सारे लूप चलने के बाद हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा और यहाँ से -1 रिटर्न कर देगा. आई होप दिस इज क्लियर. सेम क्वेश्चन एज फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट द डिफरेंस ऑफ कंस्टेंट. वहां पे n स्क्वायर n क्यूब भी अलाउड था, बट यहाँ पे एट मैक्स n log n, so हमने उस हिसाब से सोचा. गॉट इट? लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन. ऑलराइट, what does the question say? You are given a nm representing the number of rows and columns respectively. You are also given a 2D integer array shows where source of I, ri, ci, color I. कि इस रो के इस कॉलम पे ये वैल्यू है. color I is just an integer value. Okay, indicate that cell RACI is initially colored with color I. Color I is just an integer number, so don't worry much about that. All other cells are initially uncolored and are represented at 0. Very good. At each time, every currently colored cells spreads its color to all adjacent uncolored cells in the 4 directions, down, left, and right. All splits happen simultaneously. If multiple cells reach the same colored cells at the same time step, the cell takes the color with the maximum value. Okay, this process until no more cells can be colored. Return a 2D integer array representing the final step. Let's say example 1 and 2. Okay, in one step it will spread to this one and this one, and this two at the same time will spread this one and this one. Very good. On the next one, this will spread this and this one will be this and this, and same 2 will be also this and this, and this two, this and this. So eventually, because हम इन ये जो हमारी क्रॉस डायगोनल है इसके सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं 1 और 2, अगर कोई पहले पहुंचा, सी अगर कोई एक ही पार्ट पहुंच रहा है तो वही आंसर में आएगा. अगर दो पार्ट एक साथ पहुंचे, दो या दो से ज्यादा भी पार्ट एक ही टाइम में पहुंच रहे हैं, तो मैक्सिमम वाली वैल्यू वहां पे स्टोर की जाएगी. तो यहाँ पे क्योंकि ये पहले सेकंड में ये 1 यहाँ तक है, 2 यहाँ तक है, सेकंड में दूसरे सेकंड में
1 भी यहाँ पे अप्रोच करेगा, 2 भी यहाँ पे अप्रोच करेगा, इसलिए 2 की वैल्यू बड़ी है तो वहां पे 2 मार्क हो जाएगा। दैट्स इट। हम किसी भी दोबारा मार्क नहीं करेंगे कि एक बार, हमें हर एक सेल पे बस एक बार विजिट करना है जाकर। व्हाट वी एग्जैक्टली नीड टू डू इज, हमें कुछ सेल्स गिवन है, उन सेल्स पे एक वैल्यू भी गिवन है, जैसे कि इसमें गिवन है कि 0,0 पे है वैल्यू 1 और 2,2 पे है वैल्यू। इन सेल्स पे ये वैल्यू गिवन है, इन सेल से ये स्प्रेड होना स्टार्ट होगा इन 4 डायरेक्शंस। जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, जहां पे भी आप अगर फर्स्ट टाइम पहुंच रहे हैं तो उसको आप मार्क कर दें। अगर आप सेकंड टाइम पहुंच रहे हैं, इट मीन्स लेट्स से अगर यहाँ पे एक डिस्टेंस और होता है ना, और ये 1 उससे पहले पहुंच रहे होते, 1 अगर इनमें पहले पहुंच रहे होते तो 1 वहां पे मार्क हो जाता, क्योंकि वहां पे कुछ कोई और था ही नहीं उस टाइम पे। अगर 1 पहले पहुंच रहा है तो 1 मार्क हो जाएगा, 2 पहले पहुंच रहा है तो 2 मार्क हो जाएगा। अगर दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं तो बड़ा वाला मार्क होगा। इज इट ओके? सो अगर हम ऐसा सिंपली सोचना स्टार्ट करें कि हमें स्प्रेड करना है इन ऑल फोर फोर डायरेक्शंस, कुछ ना कुछ चेंजेस करने, बेफस्ट इज समथिंग दैट कम्स in our mind at very first. Okay, so we'll start with bfs, and obviously in queue we'll store all the initial rows and columns, these pairs. Okay, and definitely we'll go and spread in the all four possible directions अगर वो उन पे अब तक कोई वैल्यू नहीं है, या फिर अगर उन पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो इनिशियली उन पे कुछ था ही नहीं, या फिर उन पे जो वैल्यू है, उससे हमारी वैल्यू बड़ी है, बट ऑल्सो हम सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। We'll start with every cell. We'll start with 1. We'll mark all the additions. Okay. And then we'll store all these additions into our queue again. Then we'll, क्योंकि in our queue, we will have 2 before these additions. Okay. So in this way, in for this 2, we'll spread these 2. Got it? Then for this one, these 2 and these 2. We have 4. These 2 will spread in these 3. When they will spread in these 3, then at the same time on the queue, I just hope कि BFS you all guys know, because अगर आपके माइंड में BFS नहीं है, then it's very tough to understand. But if you know the BFS, then it's pretty easy. Okay, so just insert these things into queue and these twos. Okay, that's what exactly we are doing in a very simple way. If you have any doubt in this one, please let me know in the comments or in our platform. I'll definitely make a separate video for that. And any concept जो भी इन क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, अगर आपको नहीं आते and you are interested to learn, please there's a request in our platform, you have an option. हमें अगर उस पे पोर्ट्स मिलते हैं, then we'll make a definite a detailed video on that concept. Okay, we'll start with our answer. हमें जो कि है क्लास रिटर्न करना है, we have a queue. In this queue, what we are doing is we will just insert the row and column and the time factor. Why this is important? Because we know at any cell, if multiple spreading factors are coming into a cell, it will take the maximum value, right? But the condition is कि वो सारे के सारे एक ही टाइम पे चाहिए। अगर एक सिग्नल आया पहले तो वही आंसर होगा। अगर किसी एक सेम टाइम पे एक से ज्यादा आएंगे और वो इनिशियली उस पर कुछ था नहीं वैल्यू, तभी वो उनका मैक्सिमम लेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द टाइम कि मैं इस सेल पे किस टाइम पे मैंने चीजें मार्क की थी, और हर एक स्टेप में एक सेकेंड का फैक्टर आएगा। गॉट इट? दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। इनिशियली टाइम में हम बोल रहे हैं कि इसमें मैक्स वैल्यू, इसमें कुछ है ही नहीं। गॉट इट? देन दिस इज फॉर जस्ट डायरेक्शन आइट्रेशन इन ऑन द 4 डायरेक्शन। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रो, कॉलम एंड वैल्यू ऑफ द इंटीजर, जो कि इस पे वैल्यू मार्क्ड है हमने अपने आंसर में, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिन पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कलर्ड है, उनका हमने आंसर एज इट इज अपडेट करा। गॉट इट? और इन पे, क्योंकि एट इनिशियल टाइम, एट जीरो टाइम, इन पे ऑलरेडी चीजें मार्क है, तो इन पे कोई अपडेट नहीं होगा, राइट? तो इसलिए उनका टाइम हमने 0 कर दिया। गॉट इट? और क्यू में ये सारे के सारे रोज और कॉलम जो इनिशियली हम पे है, हमने इंसर्ट कर दिया। अपना बीफएस का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। जब तक कि ये क्यू मेरी इम्पटी नहीं हो जाती, जस्ट एक एक करके आप निकालते जाए। जो भी रो और कॉलम है उसके चारों डायरेक्शन में आप जाएं, उसके चारों डायरेक्शन में आप जाएं, ये आपकी उन चारों डायरेक्शंस के लिए एक एक करके एक एक बार में रो कॉलम्स आएंगे, ये सेल्स हैं। क्या वो सेल वैलिड है? अगर वो सेल वैलिड है, नो 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 नो, प्लीज प्लीज प्लीज,
अगर आप अगर आप का जो टाइमिंग है उस सेल की, जो टाइमिंग है उस सेल की, जो जिसमें आप जाना चाहते हैं, अगर उसकी टाइमिंग अगर उसकी टाइमिंग आपकी टाइमिंग के प्लस वन, क्योंकि आप अगर उस पे जाना चाहते हैं, आप यहाँ पर हैं, आप अभी आरसी पर हैं, तो अगर आप एनआर या एनसी पर जाना चाहते हैं, तो आपको एक स्टेप यहाँ से लेना होगा ना। तो अगर आपका वन स्टेप लेकर भी ये इसकी वैल्यू बड़ी है, मतलब कि इसमें कोई वैल्यू अगर है भी, तो वो बहुत लेट आई थी। मतलब मैं इस जो जिस भी टाइम पे इसमें वैल्यू इंसर्ट की गई है, मैं उस टाइम से पहले इस पे रीच कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं इस पे वैल्यू अपडेट कर सकता हूँ। डू गेट इट? इसीलिए हमने यहाँ पे इनिशियली मैक्स वैल्यू डाली थी, ताकि फर्स्ट टाइम तो जो भी है वो अपनी वैल्यू अपडेट कर सके। गॉट इट। तो बेसिकली अगर मैं मेरा जो टाइम है उसमें प्लस वन फैक्टर, क्योंकि मुझे किसी तक रीच करना है, अगर वो छोटा है, जो भी टाइम है मेरे एडिशन सेल पे, इट मीन्स कि मैं उस पर पहले पहुंच सकता हूँ, जो भी उस पर अभी वैल्यू है, जिसने भी वो वैल्यू इंसर्ट की है, राइट। अगर ऐसा है, उस पे उस पे जो वैल्यू है, उस पे जो टाइमिंग है, मैं अपना टाइम डाल, क्योंकि अब यहाँ पे आपको कंपेयर नहीं करना कि उस पे जो वैल्यू है ऑलरेडी, जो मेरी वैल्यू है, मैं जो मैक्सिमम होगी वो डालूं। नहीं, क्योंकि आप पहले पहुंच रहे हैं, उस पे जो टाइम ऑलरेडी मेंशन है, आप उससे पहले पहुंच रहे हो। पहले पहुंचने का मतलब है कि आपकी ही वैल्यू उसको लेनी ही पड़ेगी, भले वो छोटी हो बड़ी हो, डजेंट मैटर। अगर आपका टाइम फैक्टर छोटा है वहां तक पहुंचने का, तो आप वो उसको आपका ही आपकी ही वैल्यू उसको लेनी पड़ेगी। आंसर ऑफ न्यू कॉलम, न्यू रो इक्वल्स टू आंसर ऑफ माई रो एंड माई कॉलम, क्योंकि उसे मेरी वैल्यू लेनी ही पड़ेगी। और अब उस पे टाइम हो जाएगा कि इस टाइम पे इस पे अपडेट किया गया था, मेरा जो टाइम है उसमें प्लस वन, ये टाइम फैक्टर उसमें ऐड कर दिया जाएगा। एंड क्योंकि ये हमने अपडेट की है, तो अब ये अपने एडजस्टेंस में स्प्रेड करेगी, दैट्स वाई हमने इसको क्यू में भी ऐड करा। इज इट ओके नाउ? Second case comes in. What if I'm reaching whatever my time is, and plus one, taking one step ahead. After that, I'm getting the equal time. That is of my neighbor मीन्स जो मेरे नेबर का टाइम है वही टाइम मेरा हो रहा है। अगर मैं उस पर पहुंचना चाहता हूं, तो जो मेरा टाइम है उसमें प्लस वन एक स्टेप लेने के बाद मेरा टाइम उतना ही हो जाएगा जितना उस पर ऑलरेडी है। मतलब किसी ने सेम टाइम पे उस पर अपडेट किया हुआ था। अगर ऐसा है, उस पे उस पे वो वैल्यू आएगी जो मैक्सिमम होगी, या तो अगर मेरी या फिर जो उस पे जो पहले से, दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उस पे अपडेट हो जाएगी। तो अगर मेरी वैल्यू बड़ी है, जो उस पे अभी वैल्यू है, तो मेरी वैल्यू वो अपडेट कर लेगा अपने वैल्यू में। इज इट ओके? इज इट ओके? इज इट ओके? दैट्स इट फॉर एग्जैक्टली वी नीड टू डू, एंड ऑल सेट। सिंपल। Take an answer, take a Q, take a time factor, because it is important here. It is important here. We have to make sure that if we are reaching at some cell for the first time, then we'll give our value for sure. But if we are reaching at any cell for the second, third, or fourth time, and at that time our time factor is same as that of that cell at that moment, then I will update the value at that cell if my value is bigger. Otherwise not. And if I'm reaching at any cell before the time that current cell currently holds, right, then I'll also update the value of that cell with my value. Got it? This is a very simple explanation for this question. If you have any doubt, please let me know. Okay, let's move towards our next and the last question. All right. Count good integers on a grid path. Got it? Let's understand the question first. Uh, go to the then we'll go to the our solution. Got it? So basically, we have an L, we have an R, and we have a string of डायरेक्शन जिसकी एग्जैक्टली लेंथ 6 की है, और जिसमें दो ही टाइप के कैरेक्टर्स हैं, ईदर ऑफ डी, ईदर ऑफ आर। गॉट इट? आपको इस एल से स्टार्ट होके आर तक जाने वाले सारे नंबर्स पिक करने हैं। वो नंबर में अगर 16 डिजिट हैं, दैट्स फाइन। अगर नहीं है, तो उसके पहले आपको उतने जीरो अपेंड करने हैं ताकि वो 16 डिजिट का नंबर बन जाए। फर्स्ट थिंग, गॉट इट? फर्स्ट थिंग, गॉट इट? देन आपको उन 16
डिजिट्स को कुछ इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे फिल करना है। दिस इज 1 2 3। आपको इस डायरेक्शन में जाना है, आपको इस डायरेक्शन में जाना है, लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस, राइट। सो 1 2 3 4 5 इस डायरेक्शन में आपको जाना है। और आपको वो जो आपका नंबर है जिसमें आपने कुछ लीडिंग जीरोस अगर रिक्वायर्ड थे तो आपने फिल करके बनाया, उसको आप फिल करना स्टार्ट करेंगे, उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे। आफ्टर फिलिंग दैट स्टार्टिंग एट द टॉप लेफ्ट साइड, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको अपने सीक्वेंस में ऐड कर लेंगे। जो भी है ये नंबर जो भी था हमारे नंबर के अकॉर्डिंग, ये जो भी था आप इसको अपने सीक्वेंस में ऐड कर लेंगे। और आप घूमना स्टार्ट करेंगे। कैसे कैसे लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से फिर आप ऐसे, मतलब मीन्स आप यहाँ तक ऐसे जाएंगे, फिर आप इस पे आएंगे, फिर आप इस पे आएंगे, एंड सो ऑन और यहाँ तक आते आते, ठीक है, यहाँ तक आते आते तो कैसे कैसे चीज होगी उसको देखते हैं, ठीक है। कैसे चीज होगी उसको देखते हैं। हमने ऐसे नंबर फिल कर दिए, बट अब कुछ चीजें जो आपको गिवन है, कुछ चीजें आपको गिवन है। स्टार्टिंग एट द टॉप लेफ्ट सेल, अप्लाई द 6 कैरेक्टर ऑफ द डायरेक्शन इन ऑर्डर। अगर आपको कैरेक्टर डी मिलता है, इंक्रीमेंट द रो बाय 1, मतलब अगर आप इनिशियली, लेट्स से आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आपको पहला कैरेक्टर मिला डी, डी मीन्स डाउन, आप यहाँ से सीधे यहाँ पे जंप जंप करेंगे। और जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पे थी, आपने उसको आंसर में सीक्वेंस में ऐड किया। देन अगर डी था तो आप यहाँ पे आएंगे, अगर आर है तो आप यहाँ पे आएंगे। गॉट इट, आर मीन्स राइट, डी फॉर डाउन, यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पर जो भी वैल्यू जहाँ पर भी आप आए हैं उसको अपने सीक्वेंस में आप ऐड करेंगे, उसको अपने सीक्वेंस में आप ऐड करेंगे। उसको अपने सीक्वेंस में ऐड करने के बाद देन अगेन या तो आप यहाँ पे होंगे या तो आप यहाँ पे होंगे। गॉट इट। अगेन आपको आर या डी में से कुछ वहां पे गिवन होगा, उसको फॉलो करना है। डी है तो डाउन है, आर है तो राइट। ऐसे करके आपको जाना है, ऐसे करके आपको जाना है। इज इट ओके, इज इट ओके, इज इट ओके। इन सारे पाथ पे मीन्स आपको इन पाथ्स पे जाना है, इन पाथ्स पे जाना है। एट लास्ट यू विल सी की, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, क्योंकि आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, राइट। और आप 6 स्टेप्स चले हैं, मीन्स लेट्स से दिस वन, then this one, then this one, then this one, then this one, and then this one, and then let's say this one. Okay. So 1 2 3 4 5 and 6. Okay. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, and this is 7. So you will have what? You will have uh okay. You will have a sequence of length 7. A sequence of length 7. So what you need to check is, if this sequence is non-decreasing, means either numbers are in increasing order or constant, or in fact I can say duplicates. Okay, non-decreasing means numbers are not decreasing in increasing the sequence of index, then it is a good number. So what you exactly need to do is, you need to count the good numbers in this range from L to R. From L to R. Is it okay? Is it okay? Please let me know. Is it okay? Is it okay? Is it okay? Yes, this is okay. So this is quite simple. I mean, you must be feeling कि 16 की ही फिक्स है ग्रिड, उसमें आइटरेट करने में 16, big O of 16, which is fine. And then we'll just pick that path, and then we'll check the values and all set. We'll just get our answer. Which is fine. So we just put a loop and starting from L and going till R. But wait. See the constants, bro. See the constants. We have 10 की power 15. Even N will not accept here. यहाँ पे बिग ऑफ एन भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो अगर आप आइटरेट करेंगे फ्रॉम एल टू आर, आप इवेंचुअली बिग ऑफ एन ले रहे हैं, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है इस पॉइंट पे, राइट। वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, whenever you have a big range like this कि बिग ऑफ एन भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता वहां पे, राइट। On that moment, the very first thing that should come into your mind is digit DP. Okay. How we do that digit DP? We build basically whatever the length is. It is of 16 length. It is of 16 length. No, it is of R. Okay, it is of R till the R. We'll start from L till R. So we build the number digit by digit. What means by that? Let's say if I'm saying I am on the
4 digit. So I'll not take this like this. I'll take all the possibilities as this point, then at this point, then at this point, then at this point. Got it? Got it? We have 16 digits. We have 16 digits, so we'll take all the 16, and this I'll take all the possibilities at this point, at this point, at this point. That this also this number should be in a range of L to R inclusively. Got it? Got it? Got it? Got it? Got it? बढ़िया बढ़िया. What exactly we need to do? What exactly we need to do? कैसे करेंगे हम लोग? पहला चीज तो क्लियर है कि हमें डिजिट डीपी चाहिए. एंड अगर आपको डिजिट डीपी नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, और नॉट फेमिलियर विथ डिजिट डीपी, देन आपको ये समझ में बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, इवन आपको शायद समझ ही ना आए. तो माई सजेशन वुड बी, प्लीज आप पहले इसको समझें, आप इसको जानें कैसे होता है, देन कम टू दिस क्वेश्चन. अदरवाइज आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं. Okay, and if you need a DigiDP concept video in my channel, then please let me know. I'll I'll just make a in-depth detailed video on that. Okay, but for now, let's say I'm assuming you know this, you know a DigiDP, so we just need to look how we can apply a DigiDP here. Got it? So in DigiDP, you know, okay, that two things are okay. Hmm, sorry. In DigiDP, बताओ. टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, टू थिंग्स आर मैंडेटरी. क्या है वो दो चीजें? पहला, इंडेक्स. आप कौन से प्लेस पे, कौन सी पोजीशन पे डिजिट की पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं. दूसरा, टाइप. टाइप क्या बताता है कि क्या आप इसके पहले अपने कंस्ट्रेंट पे हैं, क्या आपने अपर लिमिट रीच की है इसके पहले वाले इंडेक्स पे. गॉट इट? लेट्स से व्हाई व्हाट डज मीन, मैं थोड़ा सा इसका हिंट दूं, थोड़ा सा अगर हिंट दूं. लेट्स से आर वैल्यू इज 2569. Okay. And I'm building a number. And I'm building a number. Okay. I'm building a number, let's say. Got it? What does it mean by tight and index? Okay. I want to build a digit number. Okay. This will be my zeroth index. This will be my one, and so on. Okay. And so on. Two, three, and four. Got it? Let's say I want to check all the possibilities for this index, for this index, for this index. Got it? I want to check all the possibilities for this index. So for this index, for this particular index, what I'll check is I can take what values. So if I tell you what are the possible values for any index from 0 to 9, right? This is the only digits that we can take at any position. So what tight means by tight just means by that what is the previous digit of this digit, what is the previous digit of this digit, and is it is it 5 or or less than 5. Okay, this less than 5. Got it. This tells are tight. अब अगर आपने just think about it, अगर आपने यहाँ पे 5 लिया हुआ है, अगर आपने यहाँ पे 5 लिया हुआ है, क्या आप यहाँ पर 6 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं? कैन यू टेक अ digit bigger than 6? Can you take it? No, you cannot take it, because if you take 7, it is exceeding your upper limit. You will be have 2, 5, 7. Not possible. Not possible. Okay. Okay. So you can take here from 0 to 6. But what if here you have taken a digit less than 5? Less than 5. Less than 5. What means like you have 2, 4. You have basically means you have 2, you have you have 2 and 4. 2 and 4. So if you have 2 and 4, what does this mean? That this part, for this part, you can take anything. You can take anything. Even if I take the 999, okay, then also this will be 24999, which is lesser than this are my upper limit, which is lesser than this upper limit. This is this is basically we know by a tight value. Tight value. Got it? That
whether we have taken the our upper limit in the previous digit, previous index, previous position or not, okay. And if we have taken the upper limit, then we cannot take here any value from 0 to 9. We have to take a number in our given limit, which is for this index, it will become 6 if the if the that is true. If the that is true, means for this index, I cannot take a I cannot take a digit greater than 6. Is it okay? Is it okay? Yeah, that's great. That's great. So that's what we exactly do in our rigid DP. Okay. So can we do with this? We can do this. क्या वो accept होगा? We can think about that. So basically, what we need to do is हमें पूरा sequence build करना है. And then we have to make sure that what the sequence is non-decreasing. Non-decreasing. What does it mean by? What does it mean by? Whatever number we'll take, we'll build the 16-digit number from that. We'll put that number in our 4 by 4 grid, 4 into 4 grid. We'll follow the direction. We will follow the direction and we'll check whether this number is a non-decreasing sequence or not. Sequence of length 7 or not. If it is, then we'll increase our count. Then we'll increase our count. Okay. Understand. Direction is globally given. DDRR. For every number from L to R, for every number from L to R, the direction is same for all the numbers, right? You have to follow just one single direction. So why you're not making some like path or like that by which you can track that which are the valid indices. Now I would love to teach you one thing. I would love to teach you one thing. Let's say let's say you are at this index, okay? And I'm saying you you need to move D, okay. So where you need to go at this index, okay, fine. What if I say you R? Okay, so you need to use at this index, okay, okay, बढ़िया. So you're at third index, and for D you reached at 7, and for R you reached at 4. Can I see this in another angle? Okay, how? For R, you are just going one step ahead. You are just going one step ahead, isn't? Isn't? Yes, it is. And for D means down. You are going. How many? How many? Four step ahead. Four step ahead. Is it? Is it? Is it? How is it? How is it? How is it? Let's see. Let's see. This is one. This is two. This is three. And this is four. Okay. Is it only four fixed? No. This is because of the this is because of the base number of columns. Number of columns are four. That's why we are reaching at the same cell by moving four steps. If the number of cells five है ना, तो हमें 5 स्टेप चलने पड़ते टू गो डाउन. ठीक है. मीन्स हमें जो 4x4 की जो ग्रिड वो बोल रहा था, क्या हम उसको इग्नोर कर सकते हैं? कैसे? बाई जस्ट बाई जस्ट वन डी अरे वन डी अरे isn't isn't हम वन डी अरे लेकर के चल सकते हैं जो कि 4x4 की जो ग्रिड है उसको रिप्लेस कर सकते हैं. इज इट ओके? इज इट ओके? एंड सेकेंड जो हमारी कंडीशन थी कि सीक्वेंस शुड बी ग्रेटर. सीक्वेंस शुड बी ग्रेटर. सीक्वेंस शुड बी ग्रेटर. ओके, फाइन, बहुत बढ़िया. Sequence शुड बी ग्रेटर मीन्स कि विल only see if you are starting from this point, okay, and let's say you have D, so you will reach at this one, so you will check whether this the number present at sixth cell is greater or equal to than the second cell where from I'm coming. If it isn't means I will not go further. I just return from here. I just return from here क्योंकि इसको चेक करने का कोई सेंस ही नहीं है, राइट. अगर मेरा यहाँ पे सीक्वेंस ब्रेक हो गया, आगे चेक करके क्या सेंस है? क्योंकि मुझे पूरा का पूरा सीक्वेंस नॉन डिक्रीजिंग चाहिए, इधर डुप्लीकेट्स और इंक्रीजिंग. ओके, मीन्स कि मैं दो चीजें कंसिडर कर सकता हूँ कि वेयर आई एम गोइंग
is this value is greater or equal to the value where I'm coming from. Where I'm coming from. Is it okay? Is it okay? Yeah, that's great. That's great. Means, okay, so let's then summarize this problem. Okay. What we need to do? We need to build number numbers from L to R. From L to R. Okay. Great. From L to R. Then we need to convert that number into a 16 digit format. If it is if the if number does not have 16 digits, what we will do it? We'll add leading zeros to that number to make it of 16 digits. To make it of 16 digits. That is okay? Great. Then what we'll do is in that 16 digit, let's say these are the 16 digit number. Okay. These are the cells and we have some values over every values over every index, every cell. Okay. So we have a path then, which is direction. We'll follow this direction. We'll follow the direction. Let's say pick this one, then pick this one, then pick this one, and pick this one, and so on. While picking, I will check whether this number is greater or equals to the previous one. If it is, then only I'll move ahead. Otherwise, I'll not move ahead, right? क्योंकि उसके बाद मुझे आंसर मुझे मिलेगा ही नहीं. So for every number in the range of L to R, I need to check whether it has 16 digits or not. If it doesn't, then I'll add leading zeros to make it of 16 digits. Then I'll follow a path, and while following the path, I'll keep checking whether wherever I'm going next is it greater or equals to my current number, current value. If it is, then only I'll continue on that path. And if I reach to the end of any path, then I will return one from here because that is a valid path. So I'll add one in my count. That's it. That is what exactly we need to do. Okay. So very first, let's go to our code. And here we are building our path initially. It can have at max of 16, as I told you here. Okay. 16. So we can have a 1D instead of 2D. Okay. Easy to handle. Got it. Then we are just counting how many rows and where basically we need to go. So but I told you something here that okay, if I want to reach at this index, and the thing is R, so you'll just take plus one, and for this one you will take the plus call, right? Right, the plus number of columns. Can we convert it into a simple formula? Yes, this is the formula. Multiply the row into 4. What is 4? Number of columns. Number of columns. Very important. Very important. Then just add the columns. कितनी columns आपकी हैं? Starting from 0 0. क्योंकि हम पहला हमेशा पिक कर रहे हैं इसलिए वो 7 लेंथ की बन रही है. वो हमारा ट्रू है कि हम ये पाथ हमें लेना है, इस पॉइंट पे हमें आना है, ये हमारा वैलिड सेल है. देन पिक ऑल द डायरेक्शंस फ्रॉम देयर एंड जस्ट इंक्रीज ईदर रो. So basically, if it is down, you are going down. So you need to go to the next row. Then you will multiply this row into 4. You will come on the next one and just add the column number, which is at initial 0. So 1 into 4, 4 plus 1. Okay, so is P. You came at fourth one. How? Because initially you are here. Okay, initially you are here. Got it. And because you are starting from 0, so that's why you need to add plus call. Otherwise you must be adding minus 1. Got it. So just multiply the 4 and add the columns. You will reach at this point. This is just we are building the path, that what are the valid cells, valid indices. This is in general is 2D, but we are converting it into 1D. Okay, then we are calling a function for R, then calling for the same function L minus 1. So we'll get all the good numbers from 0 to this R, and in this one we'll get 0 to L minus 1. Then we are just subtracting, so we'll get numbers in between. Okay, numbers in between. Is it okay? Is it okay? Yeah, that's great. So in this function, what we are doing is the number is less than 0, then we cannot build it. Okay, then we are building our string. Whatever number we have,
the limit, whatever it is, we are formatting that limit into a 16 digit, because eventually we need to make the 16 digit numbers. We are formatting this number. If it does not have 16 digit, we are adding leading zeros to that number. We are building a DP of what? 16 digits. Okay, means index, type, 0 or 1, and digit, and digit. Got it? Why this 10? Why this 10? Because we need to maintain the previous. I told you. So at every cell, I need to check whether this number is greater or equals to the previous one or not. So that's why we need to maintain the previous as well. Got it? Fill this with -1. Call this index. Tight. Initially, tight is always 0. I hope you must be knowing this. Got it? Starting our previous value. For the previous value, it can be 0 or -1 as well, but we are taking 0 so that we can access in the DP as well. वहां पे हमें इसको कोई ऑफसेट ऐड करने की नीड ना पड़े. दिस इज आवर स्ट्रिंग, दिस इज आवर पाथ जो हमें फॉलो करना है. दिस इज आवर DP. That's it. What you are doing inside this, if we have reached in the at the last, at the end, the 16 index means मैंने पूरा पाथ फॉलो कर लिया है. एवरीथिंग इज वैलिड. जस्ट रन वन. ये मेरे अकाउंट पे जाके ऐड हो जाएगा. वी आर चेकिंग, वी आर मेमोराइजेशन, वी आर गेटिंग द करंट लिमिट. हाउ वी गेट दैट. अगर मेरा टाइट था 1, तो मेरी जो अपर लिमिट होगी वो इस स्ट्रिंग के इक्वल अकॉर्डिंगली होगी, जो भी इसकी वैल्यू है इस पॉइंट पे. अदरवाइज मैं 9 तक जा सकता हूँ. अगर ये टाइट नहीं था तो, अगर ये टाइट नहीं था तो मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ till 9, from 0 to 9. Got it? Count 0. And this is what we are doing. We are taking all the possible digits at this index. Okay? 0 to limit. What will the next type? अगर पहले वाला टाइट था और ये वाला DB अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है, then value will be tight, otherwise not. Next टाइट. And if it is a valid cell जो हमारा पाथ पे आता है, अगर पाथ का पार्ट ही नहीं तो मैं उस पर क्यों जाऊंगा. ठीक है, पाथ का पार्ट है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, if this number is greater is lesser than last, means not valid, because I don't need decreasing. I need non-decreasing, either duplicate, equal or greater. That's what exactly we are doing. अगर ये छोटा है तो आप इस पाथ में जाएंगे ही नहीं आगे. अदरवाइज कॉल कि नेक्स्ट इंडेक्स को बिल्ड करें. ये मेरा नेक्स्ट आइट है, ये हमारी, ये सब इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लास्ट वैल्यू है, प्रीवियस है, ये हमारी कोई स्ट्रिंग है, ये हमारा पाथ है, ये हमारी DP. और अगर ये हमारा पाथ का पार्ट नहीं था, इसमें हम कंसिडर ही नहीं करेंगे. जस्ट पास टू द नेक्स्ट इंडेक्स विद द सेम लास्ट वैल्यू. वेरी इंपॉर्टेंट, विद द सेम लास्ट वैल्यू. एंड दिस एट लास्ट वी आर स्टोरिंग इट, एंड देन वी आर रिटर्निंग इट, एंड दैट्स इट, एंड ऑल सेट. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम. Right? One thing we can do here, and I hope अगर you must be knowing this, अगर आपको DP आता है, then I'm very sure आपने bit mask भी कर रखा होगा. क्योंकि यहाँ पे at max जो लेंथ हो सकती है, that is of 15 plus 1 you can take 16 लेंथ है. So instead of taking this boolean path, we can have bit mask, better one. Okay, so we can have this bit mask here. We'll mark all the positions as one. We'll pass this path mask, and just before checking, we'll check is this a valid path. जो भी हमारा पाथ मास्क है, क्या इस इंडेक्स में हमें चीजों को लेना है या नहीं. अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स. गॉट इट. अगर ये उसके 0 के इक्वल नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स. तो एट ऑन द इटरेशन विल चेक आवर नेक्स्ट राइट, एंड विल चेक क्या ये हमारा वैलिड इंडेक्स है. एंड अगर छोटा है तो again no sense, otherwise count. Everything remains same, just the difference of this path bit mask. Got it? Quite better one. Okay, not necessary, not required, but yeah, you can do this if you know the TP and bit mask as well. If you're very familiar with the bit manipulation, then it should be a plus factor for you. Okay, that's it for this question, and that's it for this weekly contest 498. I hope you like the video, and आपको कुछ भी अगर डाउट है प्लीज लेट मी नो. आई होप मैंने सारा कुछ क्लियर किया है. कुछ कॉन्सेप्ट एज अर्लियर आई टोल्ड यू कि मैं चीजों को उतने हर कोई कॉन्सेप्ट को उतना डिटेल में नहीं ले जा पाऊंगा.
वीडियो की लेंथ का कंस्ट्रेंट है, बट इफ यू हैव any request or any particular point that you want to understand in depth, please let me know. I'll make a separate video on that in detail. So we'll learn that concept in that video. For this one, this is it, and thanks for watching. See you in the next one. Also, uh, all these codes in all three languages like C++, Java, and Python, you will get in our platform. Links are in the description. You can check out them as well. See you. Tata. Bye bye.